Prashant and Jyotilata are proud members of a cadre of village volunteers who were trained as part of the National Cyclone Risk Mitigation Program in Odisha. Civil Defence रो हमर टास्क फोर्स मेंबर्स मान को 4 दिन रो ट्रेनिंग दै छथि से ट्रेनिंग रे हमको विभिन्न उद्धार कार्य विषय रे सिखा जाय छी बन्या बात्या हले केमिति उद्धार करबो किबा घरे निया लागिथले केमिति उद्धार करबो. In India, about 400 million people are exposed to cyclones every year. The coastal districts of Odisha often bear the brunt of these recurrent calamities. 2013 रे जो बात्या आसिला आमे बड़ चिंता रे पड़िलु. सेतिरे पूर्व सूचना सरकार तरफ टीवी और रेडियो माध्यम रे जदियो थिला तथापि आमे मानकर कोनसिठारे रक्षा करिवा पई कोनसी सुविधा नथिला. बात्या को घर द्वार सब भांगिला गाय गोरु मरले मु भय रे थरथुली पुओ टेकी धरी पळेला. Drawing from the lessons of the super cyclones, the government of Odisha partnered with the World Bank to set up a cohesive risk mitigation program. The program focused on strengthening response mechanisms to recurrent natural disasters, with an aim to minimize human loss to zero. ये जो सेल्टर लेवल टास्क फोर्स कराई जो 50 जन ने सर्च एंड रेस्क्यू फास्ट एड कराई से मानकु ए भली भाव में तालीम दिया जायछि जहा कि विपर्य को से निश्चित भाव में सामना करि पारिबे. The young boys and girls, they can rescue people from water, from the treetop or from the rooftop like that. They are all trained, and that is our biggest strength in our battling for any disaster. Infrastructure in coastal Odisha has been upgraded to enable efficient evacuation, leading to increased resilience. Over 300 multi-purpose cyclone shelters have also been constructed in vulnerable villages. Each shelter is armed with emergency gear, adequate water and kitchen facilities to cater for a calamity. Whenever there is a calamity, we alert the cyclone shelters. We almost picked up 9,82,000 people during the cyclone filing and put them in the cyclone shelters. To ensure maintenance of the assets, the responsibility of the shelters was handed over to cyclone shelter maintenance and management committees that comprised large number of women. In non-emergency situations, these buildings are put to use for multiple purposes. This generates revenue for maintenance and has transformed them into centers of harmony and togetherness. प्रत्येक मासरे एक बैठक आमर अनुष्ठित होछि एवं ए शेल्टर टी विभिन्न क्षेत्र अन्य क्षेत्र रे साइक्लोन थैथान केंद्र सहित अन्य क्षेत्र जो सामाजिक क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र अछि ताको मध्ये आमे सहभागिता हिसाब रे आकु आमे ए बात्या स्थल व्यवहार करे आमे मध्ये गुरुदायित्व रहिछि. इनसाइड भी प्रोजेक्टा एते आवश्यकता थिला जोटा कि समुद्र उपकूल लोक माने बहुत खुशी अछंती एवं थैंक मते देइचंती विश्व बैंक को एई भली प्रकल्प हमर जीवन रक्षा करे बहुत सहायक हैला. आगुरु भय कि थेला आउ से घर हेलाठो एबे आमे बहुत खुशी रे अछु किछि आउ डर भय नाही. Empowering the community has been the one big game changer in this project. It has significantly bolstered their confidence to deal with natural disaster and battle every storm. टास्क फोर्स मिसे कि हमको एते खुशी लागु जे निजे सेफ रही कि अन्य को माने सेफ्टी करबा को सेति हमको खुशी लागु.